హలో, नमस्ते, सत श्री अकाल, अंदर की नमस्कारम। आप आज सुन रहे हैं मुझे यानी कि कामना को इस ऑडियो पॉडकास्ट सेगमेंट के थ्रू, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट इन प्रैक्टिकल अब हुआ है। सो आई हैव ओपन दिस मीडियम टू open a platform where we can have a conversation on topics, on general topics, and make friends with the like-minded people. And before I go and start the topic, let me give a brief introduction about myself. मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, बीकॉम और सीएस क्वालिफाइड हूँ फ्रॉम इंडिया, और पिछले 6 साल से मैं यूएस में रहती हूँ। मैंने 5 कंट्रीज ट्रैवल करी हैं अभी तक, और 21 स्टेट्स और 50 स्टेट्स ऑफ यूएस से कवर कर लिए हैं। थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है एंड थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस भी जोड़ लिए हैं। सो मैं सोच रही थी कि फ्रेंड्स हर एज में बनाना कितना मुश्किल होता है, तो क्यों ना ये मुश्किल जर्नी ऑडियो पॉडकास्ट के थ्रू मैं करूं, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद द पीपल हु आर लिविंग अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल एंड just want to create a well grounded better lifestyles for each other, like every day, like working on yourself. तो ये जस्ट एक मेरा एम्बिशन या गोल समझ लीजिए, एजेंडा समझ लीजिए, ऑडियो पॉडकास्टिंग का है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी इंट्रोड्यूस टू द टॉपिक ऑफ द डे। सो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ, वेलबींग एंड लाइफस्टाइल पर। वाई मेंटल हेल्थ? क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक जो था वो कोविड ने इंट्रोड्यूस करा है। इससे पहले हमें नहीं पता था कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली होती ही क्या है। सो कोविड ने एक बहुत ही अच्छी चीज़, लाइक, ठीक है, बुरी चीज़ें भी हैं उसकी, बट इफ आई जस्ट गो थ्रू अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, आई लाइक दैट द corporates actually realized that there is an issue which is called a mental issue, and they still took a baby step towards it. मैं आपको एग्जाम्पल बाद में बताती हूँ। सो मेंटल इशू को इनिशियली आप you understand that there is a cause, and then you take some steps to lighten the impact of it. So for example, there are corporates like मेरे हस्बैंड के कॉर्पोरेशन, जहाँ पर उन्होंने मेंटल हेल्थ इशू के ऊपर काफ़ी chat shows and everything करा, and then they introduced a helpline which is calling every employee every month and checking with them what is the status, like, are they depressing, or are they feeling depressed, or are they suicidal in nature or something like that. Even though it is just checking the box in the corporate strategy and responsibility, but at least they are showing the effort that they value their human assets, which is their employees. So I like that impact. And a lot of the corporates was also introducing yoga, meditation, and everything like that. So I like this, that there are certain organizations or world over, people realize that there is an issue called as mental issue or the mental health. And the famous hashtag in the social media is hashtag social media, oh sorry, hashtag mental health awareness month हुआ था, जो कि आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है क्या, कौन सा है। सो चलते हैं इस टॉपिक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि बाय डेफिनेशन मेंटल हेल्थ होती ही क्या है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जब मैंने गूगल किया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी है, कोटिंग इट, quote, mental health is a state of well-being that enables people to cope with stresses of life and learn well and contribute to the community. So इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि लाइफ में स्ट्रेस तो सबके ही है,
ठीक है. सो नोबडी इज लाइक कोई भी क्या कहते हैं, उससे वंचित नहीं है. आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस कोट क्योंकि मैं आजकल वो देवों के देव महादेव एकदम सीरीज में देख रही हूँ उलू पे. एंड प्रोबेबली आई माइट यूज सम ऑफ द हिंदी वर्ड्स जो मतलब मेरे डे टू डे रूटीन में मैं सुन रही हूँ, तो इसलिए मेरे मुंह पर आ रहे हैं. एंड maybe I might quote some of the mythological impact as well. But let's just focus back on the topic. तो इसका मतलब है हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्टेट है जिसके अंदर एक इंसान जो है वो अपने दिनचर्या में लाइक जो भी स्ट्रेसेस हैं वो झेल सकता है, और वो लर्न कर रहा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में. सो अगर स्ट्रेस है तो हर किसी को है, आप अकेले नहीं हैं. That means that we have a gang of people who are having stresses of life. Even एक छोटे बच्चे को अपने एग्जाम का स्ट्रेस है, एंड ओल्ड एज में अपनी नीज को इम्पैक्ट होने का स्ट्रेस है, या फिर हेयर फॉल होने का स्ट्रेस है. सो स्ट्रेसेस आर सो मेनी. लाइक इफ यू थिंक यू हैव स्ट्रेस, इट्स द नदी पूरी भरी हुई है स्ट्रेसेस से. सो जब हम मेंटल स्ट्रेस पे जाते हैं तो देखते हैं कि क्या डेफिनेशन दे रखी है गूगल में वेल बीइंग की. सो आई फाउंड आउट डेफिनेशन ऑफ वेल बीइंग, व्हाट इज वेल बीइंग इन by the Center of Disease Control and Prevention. A well-being is a state of being comfortable, healthy or happy. So well-being का मतलब है कि हम बहुत comfortable हैं और healthy हैं, healthy wealthy, या फिर खुश हैं. So if God has given you all the privileges of being comfortable and being on a healthy body, or you are happy, you should be thankful to God that you are blessed, because there are people who might not be blessed with it, and they are working towards these blessings. So this is the definition of a well-being. There is one more definition, which is well-being is a positive outcome that is a meaningful for people or for many sectors of society. It tells us that the people perceive that their I don't know मैंने क्या लिखा है ये, people's lives are going well. So that means that in crux that well-being का मतलब है कि हमारी लाइफ अच्छी चल रही है. So how do you define that हमारी लाइफ अच्छी चल रही है? Is the famous रोटी कपड़ा एंड मकान कॉन्सेप्ट्स. हमारी नीड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. हमको रोटी चाहिए, हमको रहने के लिए छत चाहिए, और हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए. सो इफ रोटी कपड़ा एंड मकान, द फूड, द clothes and the house is housing is you are being blessed. Like some people have their generational wealth of large houses given to them in inheritance and all that. So definitely boss, you are truly blessed, and you have done good deeds, so keep on doing good so that you and your entire generations are getting blessed like this, and should be blessed in coming future. So that means that when all your basic necessities like these are met, you are in employment, you are doing well in life. Now अब कितना क्या और इससे ज्यादा करने वाला, वो अलग स्ट्रेस आप सबने या हम सबने डिफरेंट अपना कल्टिवेट कर रखा है. बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन कि हमारी ये सारी नीड्स बेसिक नीड्स मीट होती हैं. सो वी आर इन द स्टेट ऑफ वेल बीइंग. अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक और भी चीज थी कि स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ. अगर आप वेल बीइंग हैं तो आप अपनी डे टू डे स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ से निकल रहे हैं. सो what is stress first of all? So by definition from the Google, stress is how we react
when we feel under pressure or threatened, it usually happens when we are in a situation that we don't feel we can manage or control. So if I, uh, do my side of this definition is, um, being in a very uncomfortable situation, and how my body and my mind and my mouth or my tongue reacts to. So if someone is, I cannot be Mahatma Gandhi, like, one slap and the give the another cheek. I cannot be. By by mind, I am not like that. Maybe I'm not saying anything against the father of the nation, but yes, he might be in that age and everything, more of an accomplished fellow. So that means that if someone is saying something bad to you, or there is a situation where, you're not feeling happy, or someone's words are annoying you, or you're feeling uncomfortable in it, that means that your body is feeling stressed. There can be so many stress. जैसे मैंने पहले कहा था, पूरी the entire river is filled with stress. So stress is can be divorce, loss of job, increase in financial obligation, शादी करना स्ट्रेस है, कोई नए घर में मूव करना, कोई नई कंट्री में मूव करना, इमोशनल प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंगर, दुख, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारे थोड़े बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रेस के साथ दे ऑल्सो ग्रो अप लाइक वीड इन द गार्डन. सो ये सब अगर एक इंसान, अगर हम दोबारा से वो डेफिनेशन के लिए जाएं, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान इज सॉर्टेड आउट, सो वी हैव वेल बीइंग, आवर वेल बीइंग इज सॉर्टेड आउट, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ. सो हम ये सारे स्ट्रेस जो हैं वो एक आराम से निकाल रहे हैं डे टू डे लाइफ में. देन एंड ऑल्सो with these we are contributing to the community. We are a mentally stable person, or not having not saying mentally stable, I'm sorry to use this word, but we don't have any mental issues. So I don't think कि ये थोड़ी uncomfortable conversations के route पे नहीं जाना चाहिए. So I feel कि कोई भी लाइफ में इन सब चीजों के साथ जो भी लाइफ में जा रहा है, at least one should do is applaud that person. ठीक है, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ ह्यूमन नेचर में जा सकते हैं, बट each and everyone is having one or the other issues in their lives. So first I would say is, to just be with that person, or just indirectly communicate that, hey, I'm there, like, I know that you are going through some stuff in your life. I hear you. Like, इतना ही करना बहुत है. You might be having zillions and zillions of money, trillions of money, or whatever, but if you are not having the basic human, connection, or you say एक सांत्वना देना अगर नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट सिर्फ ये कह देना, या ये ऐसा जता देना दैट हे, आई एम देयर फॉर यू, मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस फॉर पीपल, और फॉर द एंटायर कम्युनिटी who are dealing with stress, or who is stressed, including me as well. So आपको बहुत अच्छा लगेगा just by the fact that you are doing a social service here, just by saying that I hear you. And maybe if that depends upon what kind of a relationship with you are with another person, but you should say like, yeah, I know that this is happening with you, but hey,
the time will pass on, things are going to get better. एक इतना बोल देना, एक पॉजिटिव affirmations दे देना is the most perfect thing you can do. And also आपका कर्मा भी प्योरीफाई होता रहेगा इसके लिए. So there are people who are like having emotional problems, like they go through so many uncomfortable conversations. अब organizations में there are people who help in this emotional traumatic kind of conversation. Nobody wants to share what is happening with them to others. Like everybody has built up a wall with them ki haan, like that wall is like a fancy picture on all the social media handles, and inside what is happening, they are not conversating, they are not coming up front. And especially girls तो फिर भी कर लेती हैं. Men on the other hand are different breed out of it, who don't even talk to their own family members about what they are going through in a very nicer manner. I know कि हाँ, Indian parenting or Indian parents go deep. They don't go just hear it. They go and try to resolve the issues as much as they can, because they are engineered in that manner, and there's nothing wrong with that. So when you have like a sick family member, or you have lost a parent, or in Western world you have lost a pet, also causes stress. um Having, or during that tenure of getting a divorce from a person whom you have lived for quite a long time, getting custody of your belongings or your kids or something. Along with that, people are still doing their regular job, people are still earning money, people are still eating. So with those things, you are taking care of the well-being part, but your mental health inside, what you're doing, going through, even if you share with a lot of people who might understand or might hear you, it's only happening with you. So you are responsible for yourself, first of all. So self care, self worth is you know the area where everyone should look, because you cannot find the perfect solution for everything. You cannot find a perfect listener who can hear all your issues, or you cannot find a perfect companion who will sit with you and you know be in that journey with you. No, no one in the entire world can help you if you cannot help yourself. So how um, this all impact, these stresses impact ourselves is, it it affects, first of all we have to understand that all everything, all these traumas, all these mishappenings which unfortunately happens in everyone's life, is not their own fault. So it happens by I would say supernatural power or god's wishes or anything, or they are there for just giving you, कुछ सिखा के जाना चाहती है. सो जब वो सिखाती है, या फिर ऐसी घटनाएं और ऐसे इवेंट्स आपके ऊपर होते हैं, तो ये सिर्फ आपके दो चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है. वो एक होता है माइंड और एक होता है बॉडी. और जब माइंड और बॉडी पर होता है, जैसे हमें कहीं चोट लगती है तो हमें पता चलता है कि हमारा खून निकल रहा है, सो लेट अस पुट अ बैंडेड ऑन इट. बट माइंड पे जब चोट लगती है तो कुछ नहीं होता. और डीप डाउन अगर हमारे बॉडी में इम्पैक्ट आता है, यू नो लाइक पैनिक अटैक और समथिंग लाइक दैट, तो बहुत ही टाइनी टाइनी सा लगता है. तो आपको लगता है कि हाँ नहीं भाई हम झेल जाएंगे, हेडेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम झेल जाएंगे. सो इफ वी गो दैट वी लाइक, अगर हम किसी पर्सन को देखें जो कि बहुत खुश है, वेल बीइंग है, उनका सारा कुछ सॉर्टेड है लाइफ में, सो व्हाट आर द साइंस जो हमें बता सकते हैं कि
actually we are not in a good mental health. Like एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, इरिटेशन, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, हेडेक्स आ जाते हैं, बॉडी पेन्स आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, स्लीप डिप्राइव हो जाता है, कई लोग स्लीप पिल्स लेने लग जाते हैं, लॉस और इंक्रीज ऑफ एपेटाइट हो जाता है, विच इज अनदर डेफिनेशन, स्ट्रेस ईटिंग। काफ़ी जो ओबेसिटी हो जाती है वो इसके कारण होती है, क्योंकि आप स्ट्रेस ईटिंग बहुत कर लेते हैं, या हो जाती है। अल्कोहलिज्म काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो डेली फंक्शनिंग में ये सारी चीज़ें जब होती रहती हैं, तो एटलीस्ट अगर आप या फिर आपके साथ रहने वाले कंपेनियंस और एनीवन who who knows about these signs can actually very well spot out that you are under a stress, and it impacts your daily life, work or school or whatever. So ये सब चीज़ें जो जब हमारे बॉडी में होती हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि हाँ, हम स्ट्रेसफुल हैं। अब जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हम कैसे अपने आप को कोप अप करें स्ट्रेस से? ये सब स्ट्रेसेस जो होते हैं वो थोड़े अनअवॉइडेबल होते हैं, बट कोप अप करने के लिए हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, काउंसलर के पास जा सकते हैं, फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं, फैमिली के पास जा सकते हैं। और अगर हम किसी की भी हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरा कहना ये है कि वर्क ऑन योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, जस्ट मतलब भगवान पर छोड़ दीजिए अपना। समय के साथ या तो भगवान आपको दे देंगे, या तो फिर आपको वो शक्ति दे देंगे कि बॉस, इस टाइम ये चीज नहीं मिल रही, और आपको लेट इट बी करके आगे चलना है। बिकॉज इफ यू आर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इज अ साइन ऑफ डेथ। सो रुकना नहीं है कहीं। तो अगर बाई चांस आपको एक्स चीज, वाई चीज, जी चीज नहीं मिल रही है, नंबर वन, ट्राई 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 एंड यू विल सक्सीड। लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, सारी जगह से ट्राई करना। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है कि हाँ नहीं, अब नहीं, नो। एंड अल्टीमेटली इफ ऑल द एफर्ट्स आर इन वेन, किसी भी एफर्ट का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, बॉस, लीव इट टू द गॉड, उनके ऊपर छोड़ दो। अपनी लाइफ में बस ये देखो दैट ही इज देयर फॉर यू, एंड दैट्स इट। एंड माइंड यू, I believe in God. I don't have any solution for the people who don't believe in God. So yeah, I cannot say anything on that topic. So what are the stresses that are unavoidable in our day-to-day routine? जो छोटे छोटे स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है जॉब इंटरव्यू से पहले पहले, चाहे वो जूम मीटिंग के थ्रू हो या फिर इन पर्सन। स्कूल एग्जाम्स से पहले पहले किस किस की होती है? मेरी तो बहुत होती थी। अनरियलिस्टिक वर्कलोड्स, आज का आज डेडलाइन, प्रोजेक्ट डेडलाइंस टू बी completed. So these are the kind of the stress which you cannot avoid in your life. Insecure job और conflict with the family. बट आप ये देखिए कि इनमें से कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, कुछ कंट्रोल में, लाइक 0.001%, विच यू ऑलवेज एंड ऑलवेज शुड अवॉइड एट द बेस लेवल। क्योंकि अगर ये चीज आप खुद अपनी तरफ से डाल रहे हैं, एक तो नॉर्मली लाइफ में इतने स्ट्रेस हैं जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, दीज आर अनअवॉइडेबल स्ट्रेसेस, बट देर आर सर्टन पॉसिबिलिटीज ऑफ सम स्ट्रेसेस विच यू कैन एक्चुअली रिड्यूस। जैसे कि घर का माहौल क्लीन, शांत रखना, घर में कोई ऐसी बात नहीं कर देनी जिससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो। इसका मतलब है कि घर में पॉजिटिव रहना है,
ऐसे कुछ टॉपिक्स, ऐसी कुछ चीजें जो घर के इक्विलिब्रियम को हिट करें या फिर उसका तालमेल बिगाड़ दें, फर्स्ट लेट्स अवॉइड ऑल टुगेदर। क्यों एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपने ऊपर लें? अगर हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, रिजॉल्व इन अ पीसफुल मैनर। थोड़ा वो गिव इन करें, थोड़ा वो गिव इन करें, और गेट इट रिजॉल्व विद। क्योंकि अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। सो देर आर सर्टन टॉपिक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए, एंड स्पेशली आई फील कि कोविड में तो बहुत लड़ाइयाँ और डिवोर्सेस हुए थे बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। एक, आपके पास, आप एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हो, एक दूसरे के ऊपर हो। आप लोगों के पास, दो लोगों के पास, लाइक XYZ के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब एक चीज ऐसी होती है जो सोलली एंड सोलली मेरी है, ये इसके अंदर मुझे किसी XYZ की जरूरत नहीं है। तो ये दो चीजें अपनी लाइफ में जरूर होनी चाहिए। फर्स्ट, enjoy योर ओन कंपनी। एक अ हॉबी। और जैसे मेरे जैसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि हॉबी क्या होती है, ट्राई एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विच यू वांट टू ट्राई, and you can try, and then find out what is your hobby. This is, by the way, my husband told me. So this I learned from him. So when he said that what is your hobby, I said I like everything. So he said then do everything and then find out what is your hobby. So that is, like, the tip which can be taken, and you can use it. So स्ट्रेस कैसे थोड़ा थोड़ा कम होता है? अगर किसी के हार्ट ब्रेक हो गया, या ब्रेकअप इन द रिलेशनशिप हो गया, और समथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली इट इज डिसहार्टनिंग टू नो दैट व्हाट यू थॉट वो इन प्रैक्टिस नहीं आ पाया। सो आई वुड से जस्ट गिव सम टाइम। सो सॉरी, मगर मैं फिर से कोट कर रही हूँ। मैं देवों के देव महादेव देख रही हूँ। सो उसके अंदर इवन शिव जी को भी जो चाहिए था वो वैसे नहीं मिला था। उनको भी काफी टाइम तक तपस्या करनी पड़ी थी। उसके बाद सती माता के बाद उनको पार्वती माता मिली थी। सो यू सी कि इवन गॉड्स आर ऑल्सो गिविंग यू द टेम्पलेट of getting out of any dukh, taklif, stress, whatever you can say term. So give some time to yourself. Give some time to yourself and meditate, not just just work on yourself. ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठ जाना, रोते रहना, या बेड पे ही बैठे रहना। नो, just give some time. You might go some stages, मगर always and always work on yourself. आप अपने ऊपर वर्क करेंगे अपने आप को बेहतर करने के लिए। और जैसे ही कुछ कुछ चीजें धीरे 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 इंप्रूव होती जाएंगी, यू विल लर्न टू कोप इमोशनली। आप खुद अपने आप से कहने लगेंगे कि यस, आई वॉन्टेड दैट, बट देर वर सर्टन supernatural powers who did not wanted that to happen to me. So let me cope emotionally first and see if there is any good in that thing which you wanted and you did not get. So अगर हमारे को एक डेली बेसिस पे कुछ स्ट्रेस सिम्टम्स हो रहे हैं, तो व्हाट टू डू व्हेन एकदम से इमिडिएटली देयर आर स्ट्रेस एंड यू कैन नॉट अवॉइड? सो आई हैव सम strategies which I looked out from the mental health websites and all that. So they said that you have to slow down in your daily functioning. थोड़ा लाइट लेने का, not that heavy load. Something to read, self help books, और हमारे यू नो इतने सारे ग्रंथ हैं, होली बुक्स हैं, सो यू कैन रीड दैट, और डू वट एवर योर माइंड
relaxes. Like for me, it's music. So for you, it might be dance. So yeah. So music, sleep also helps. Talking to someone, और सबसे बेस्ट जो मैं बचपन में करती थी विच वाज डायरी एंट्री. सो व्हेन यू आर सैड और यू आर मिसिंग समवन और यू वांटेड और यू डिड नॉट गेट, राइट डाउन इन द डायरी. इवन दो मैं बचपन में करती थी एंड आई वाज राइटिंग दैट डायरी एंड टॉकिंग टू गॉड इन दैट डायरी, एंड आई वाज टॉकिंग टू गॉड इन एनी relation I wanted. I wanted him as a father. I wanted him as a grandfather. I wanted him as a boyfriend. I talked to God every time. And when my sibling used to read my diary, he used to laugh. But that actually helped me get out of all the stresses of life, because life cannot be taken so seriously. It is here to enjoy, to learn, and to leave something behind for others to even say, like, ye achhi thi. Yeah, like, whatever. So diary entry is there. um रोज अपने आप से मिरर में बोलना that I will get out of it myself. सेल्फ टॉक करनी affirmative that something positive is coming. Not to think a lot so seriously. So जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, आई फील कि उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता, इवन मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है. बट या, दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक, लाइक वन ऑफ द पॉइंटर्स विच इज़ लाइक हाईलाइटेड इन माई डायरी हियर. बट आई डोंट प्रीच इट. तो बट हाँ, अगर जो कर सकते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट. डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली. सो how to heal yourself is one thing which I want to make a connect with the human body and with the, you know some elements of human body. So हमें पता है कि एक ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है. So there are 5 elements of the human body: earth, water, fire, wind, or space. So these are the segments which our body is made up of. So that's why जब आप कहते हैं कि हमने छुट्टियों पे जाना है और आप छुट्टियों में पानी के पास या माउंटेन्स में या फिर गार्डन में या समवेयर एल्स आप जाना चाहते हैं. सो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी खुद की बॉडी आपको बोल रही होती है कि आई वॉन्ट टू रिलैक्स. सो क्योंकि हमारी बॉडी अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड और स्पेस से बनी है. सो when we are stressed, start healing all these elements. Like best है जो हमारे like elder people in the family also used to say कि जाओ जाके बाहर घास पे चल लो barefoot. It will relax you. It actually relaxes you. Why? Because your body is made up of earth, water, air, wind, space. So barefoot on the grass for some time. Drink water. Water consistency, drinking water is a biggest you know topic which I read recently कि आजकल लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, तो it impacts you. So start drinking 8 to 10 glasses a day. Eat food which is home cooked, dal, chawal, roti, whatever. A good walk in nature and listen to calm music. जैसे ही आपको एक छोटे मोटे स्ट्रेसेस आते हैं, कई बारी तो आजकल बच्चों को तो सोशल मीडिया देख के स्ट्रेस आ जाता है. सो ऑलवेज लिमिट योर सोशल मीडिया एंड गो फॉर द नेचुरल क्योर्स ऑफ रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस. सो दिस winds up our session for today. I just started podcasting, so there will be lot of mistakes. और जिन्होंने ये पॉडकास्ट लास्ट तक सुना होगा, because they might be genuinely interested in this topic. शायद वो फील कर रहे होंगे कि मेंटल हेल्थ इशू जो है
वो थोड़ा ओपन में आए, थोड़ा कॉन्वर्जेशन में आए, और वो कुछ शायद सोच रहे होंगे कि इससे कुछ सोल्यूशन मिल पाए. सो fortunately or unfortunately, these are the natural, causes or solutions which I can, share with you. And whatever, medicines or sleep therapies or whatever you go, or any therapist you go, everywhere all will be suggesting you कि आप अपना नेचर के साथ ही हील करने का कोशिश करें. एंड track your sleep 8 to 10 hours, eat good food, and just focus on your lifestyle, focus on a good lifestyle. And it is not required just for your mind and body, but overall a human being. So if you like my content for the first episode, and please do like, share, and subscribe. And if you want to share any of your views, connect with me. I will link everything in the description, how to connect with me, my email address, and all my social media handles. I would love to connect with everyone. And if you want to be a part of in the podcast, अगर आप मेरे साथ participate करना चाहते हैं audio podcasting में, so series में, you can actually email me on kamna.anand@outlook.com. और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी. एंड आई विल बी ट्राइंग टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. और कल क्या टॉपिक होगा उसके लिए मुझे सोचना है, but on different topics. But let me know if you have any topic in your mind which you want me to have a conversation like this. Thank you for today, and thank you for listening. And enjoy your day or evening. God bless. Bye bye.